So we'll start with the PIC programming and some of the basic requirements of the PIC programming, or for that matter, any whatever the platform you might have, whether you have the 8051, whether you have the PIC or some other programming, other platform. You have some of the common things, and what these common are, you need to add all your hardwares, whatever the hardwares are required. So you add it with the microcontroller. The second requirement is you configure, and this configuration part is as part of the software in the program itself. And once the system has been configured, the necessary instructions have been written in your program, then of course you can start the main program. What does the main program consist of? Or when you start writing the program, what are the things that must be there? So when you start writing a program, the program will consist of two parts. The part one will consist of configuring all your required registers. You may require the status register, you may require certain ports, you may require the option register, you may require the entcon or the PIE, PIR or some other registers depending upon the kind of program that you are writing. So in your main program, you first need to configure all those registers. And maybe if you have written all these configurations in a header file, then you can include that header file as part of your program. So it all depends on what level of expertise you have attained for writing the programs or for developing the programs. It will take quite some time. It doesn't come immediately. You need to start from the scratch, start doing one or two programs and see whether it is running fine or not. You can purchase a small kit. These days ready-made kits come in the market. You can procure one, install the software in your systems and do it at home. It doesn't cost much. But once you are able to do one or two programs, then I hope you gain the confidence of writing the program. And once we are confident of doing something, I think then there is no way that we can be stopped by anyone. So after doing all these configurations, then you write the actual procedure, what the program should do. So the actual working of the program will be written here. So your program will contain two parts. One part the configurations and second part the actual thing that is required to be done. We'll straight away come and take up some examples. And for taking up the examples, what can you do? You ultimately have to play with the board that you have with you. And ultimately, what do you have in the board? You have very simple things in the boards. You have any kind of a microcontroller. I have simply written as a music, any controller. And what is visible on the controller is nothing but the pins. You have to play with these pins. And these pins are part of a certain group. Of course, all these ports will be called as a ports. Whether it is the port A, port B, port C, port D, port E.
depending upon the controller that you are using. I told you in the previous class that if you are using a controller as 16C61, you only have two ports. But if you are using a controller like 16F877, you have 5 ports available there. So that number of ports, that will vary. Why? Because 16F61, this is only 18 pin controller and this is your 40 pin controller. So that means you are aware that when you start writing a program, what kind of hardware you have. So with this background and a little bit that I add before moving further into the topic is, now suppose this is the port, some port, let's say port B. And assuming that the port B has some internal pull-ups. You know, there are certain ports which will require an external pull-ups. There are other ports which have the internal pull-ups available. And whether it is internal or external, you need to activate them. You need to activate those pull-up resistors. Suppose this is the port, any port, PB.X, some any port, and I will wish to configure a, let's say, switch over here. Now these ports, especially the port B, port C, etc., they are floating. That means by default, if you try to read the value, it will indicate the value as equal to 1, a floating value. And that may not be the true value that you get always from that particular thing. So in those cases, what do? You activate the pull-up resistors. I'm drawing here outside, but it say here. You need to activate these pull-up resistors. So activating the pull-up resistors will then, now if you read the status of this particular pin, you will be reading the status as equal to 1 because this has been pulled up high. And when you press this particular switch, this high is grounded and you will read the pressed key as equal to 0. I hope I am clear. मैंने बताया कि अगर आप इंटरनल पुलअप्स को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पोर्ट पिन पर, let's say here you are activating the internal pull-up. So now if you read the status, because it has been pulled to VCC, if you read the status of this pin, that will be equal to 1. But if you now attach a switch here and connect the switch other position to, let's say, ground, if you press this particular switch in, this whole voltage is going to ground and the pressing operation will lead to as equal to 0 on the pin. यानी कि पिन को जब आप रीड करेंगे, जब स्विच को प्रेस किया है, तो the value read will be equal to 0. So in this case, there are two things happening. The current may enter into the pin or the current may go out of the pin and into the ground. So if the current is going out of the pin, then we say that the port is, or the pin is sinking the current. It is a sink. If it is receiving, if the pin is receiving a current, then we say it is sourcing the current. So there are two terms. One is sourcing, another is sinking. Sourcing is if outside there is some positive supply available,
and that is forcing a current inward into the pin, then we say it is a sourcing. But if the current is flowing out of the pin, we say that it is sinking. And this sourcing and sinking, it is a limit on different microcontrollers. Sometimes it is 20, maybe 20 microampere. You need to actually see the data sheet of the controller, and the other sinking will be 25. So you have to be within those limits, and if the limit is exceeding, there are the chances that the particular pin will get burned. So you have to be within those limits. So now with this background, let's see how can we start writing a program. Let's say we want to, the program is, let's say we want to configure some port, any port, it can be any port, whatever the port you can think of, whether it is port A, port B, port C, port D, or whatever it is there. So if you have to configure the port, and what is that configuration? Configuration can be, you can make this port as input, or you can make this port as output. That is what the configuration is. I want to attach a switch onto the particular pin. So I have to configure that particular pin as an input pin. But if you have to attach a LED onto that particular pin, so obviously you have to make that pin as a port as a output. So this is what exactly the configuration is. कि किसी पर्टिकुलर पिन या पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि उसको हम एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना चाहते हैं या उसको हम एज ए आउटपुट पोर्ट यूज करना चाहते हैं. तो देखिए इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे. We want to configure, let's say for example I want to configure port B. By default the ports are acting as an input port. By default the ports are input. तो अगर बाय डिफॉल्ट से हटा के आपको उसको आउटपुट पोर्ट बनाना है, आपको एलईडी कनेक्ट करना है, तो इसको पोर्ट को आपने कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. वापस इनपुट बनाना है, आपको दोबारा से फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे? हम ऐसे बढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको कि यू हैव टू, दैट इज अ बैंक 0, you have the bank 1 register, and depending upon the controller there can be more banks. There can be bank 2, bank 3 registers also. I want to deal with the port B. Port B register is in the bank 0 at address 6. So the address of port B is address 6. So अगर port B को एक्सेस करना है तो आप उसके एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं. और इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका जो रजिस्टर है ट्रिस बी, वो बैंक 1 रजिस्टर के अंदर है, और जिसका एड्रेस यहाँ पर 86 उसका एड्रेस है. तो जब इस रजिस्टर को एक्सेस करेंगे तो इस एड्रेस पर रहेंगे 86 पर. जब पोर्ट को एक्सेस करेंगे तो कितने एड्रेस पर है? 6 पर है. और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट तो जो ये पोर्ट्स हैं दे आर एक्टिंग एज ए इनपुट पोर्ट. तो इसके अंदर ट्रिस बी के अंदर यू विल फाइंड बाय डिफॉल्ट द वैल्यूज आर 1 1 1 1. तो इसको अगर पोर्ट बी को आउटपुट बनाना है तो मुझे यहाँ पर ऑल जीरोज लिखनी पड़ेंगी. अगर 8 बिट को 8 पिंस को पोर्ट मुझे आउटपुट बनाना है तो मुझे 4 को इनपुट और 4 को आउटपुट बनाना है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 जीरोज और 4 वंस. तो ये 4 पिन मेरी बिट पिन नंबर 0 1 2 3 ये मेरी इनपुट हो जाएंगे. पिन नंबर नेक्स्ट 4 5 6 7 ये मेरी आउटपुट बन जाएंगे. तो मुझे लग रहा है शायद आप सबको एक हिंट मिल गया है कि वी हैव टू प्ले विद दीज 2 रजिस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्फ़िगरिंग. लेट मी राइट द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर कॉन्फ़िगरेशन. So we start with, let me
declare, so this part, let me declare some constants. I write port B EQU 6, port B equals 6. And it is as good as when I write port B, I am referring to the address 6, direct addressing के अंदर. Then मुझे trace B को भी यूज करना है. I can write trace B equals 86. मुझे स्टेटस रजिस्टर यूज करना है. स्टेटस रजिस्टर बैंक 0 में है एट एड्रेस 3. क्यों? क्योंकि मुझे एक बार यहां जाना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा. बैंक सिलेक्शन के लिए, बैंक सिलेक्शन कहां पर होता है? स्टेटस रजिस्टर के अंदर. तो मैं उसको भी यूज कर लेता हूं. STATUS स्टेटस इक्वल्स 3. और स्टेटस रजिस्टर में क्या है? स्टेटस रजिस्टर में आपको पता है पिन नंबर और बिट नंबर RP0 और RP1. ये पिन है मेरी, जिनको कि मुझे 00 है तो बैंक 0, 01 है तो बैंक 1, 10 है तो बैंक 2 और 11 है तो बैंक 3. तो मुझे बैंक 1 में जाना है तो RP0 को मुझे इनेबल करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, और RP1 को रीसेट करना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं. तो आई स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. ORG0 go to start. Start is a label and let's say the label start is here. So there can be other instructions here. So when I come to this start, I will configure these registers. So I write the status register. बैंक 1 में जाना है तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा. So I write bit set of the file. The name of the file is status, STATUS, and I have to set bit set. कौन सी bit को set करना है? इस bit को set करना है. So if you say this is bit number 5, you can check your register for the correct value, whether it is 4 or 5 or 5 or 6. So assuming this is 5, so comma I can write 5. अगर आप ये 5 नहीं लिखना चाहते, आप RP0 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ इनिशियलाइजेशन में आपको करना पड़ेगा. यहाँ तो आप लिख सकते हैं RP0 इक्वल्स लेट्स से 5. ये 5, तो आप यहाँ पर फिर RP0 लिख सकते हैं. तो आप कहां पर चले गए? बिट सेट कहां चले गए आप बैंक 1 में चले गए. तो बैंक 1 में आपने RP0 सेट किया है. नाउ आई राइट move a literal into the accumulator and let's say I write hexadecimal value 00. So I move this literal 00 into the accumulator. तो accumulator में वैल्यू क्या आ गई? 0. एंड इस accumulator को मैं ट्रेस रजिस्टर के अंदर ले जाता हूं. तो मैं कैसे लिखूंगा? move into the accumulator the contents of, so this is move W into the register file. So move W into the register file F and the name of the file is trace B. तो अब देखिए क्या हो गया होगा कि accumulator में वैल्यू थी 00 और इस accumulator को trace B में, तो ट्रिस बी में 00 चला जाएगा, ऑल जीरोस. सो ट्रिस बी इज लोडेड विद ऑल जीरोस. और ट्रिस बी में 0 देंगे तो क्या होगा? मेरी पोर्ट बी मेरी आउटपुट पोर्ट बन जाएगी. अब मैं जो भी पोर्ट बी पर लिखूंगा वो मेरा आउटपुट पिंस पर जाएगा. यानी कि मुझे कॉन्फ़िगर कर दिया है. तो अब ये अगर मेरी पोर्ट बी यहां पर पिंस है और मैंने अगर यहाँ पर 101010 लिखा है और यहाँ पर अगर एलईडी कनेक्ट कर दिया मैंने, तो क्या होगा? ये एलईडी ग्लो कर जाएगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ होगा, ऑन हो जाएगा, इस तरह से करके.
So now if I write anything on the port B, so that will be outputted onto these lines. Let us say I now move, I can directly also write move a literal into the accumulator, and let us write the literal as hexadecimal value as 55. What is the meaning of 55? 0101 0101. तो ये मेरे यहाँ पर आ जाएगा 0101। तो जहां जहां पर 1 है, अगर ये एलईडी लगे हुए हैं तो वो एलईडी मेरे ग्लो होंगे। कब? जब मैं इसको लिखूंगा पोर्ट के अंदर, पोर्ट डी सॉरी मूव accumulator add a file, and this name of the file is your port B. So name of the file is port B. Try to read this program, and this is the end of the program. Take a minute of time and go through this program, and in case of any doubt you can come back to me. Look at this slide, take a minute of time and try to understand what the program is. Any query, any doubt? So my question was, you can come on the chat in case of any doubt. So my question was to configure port B as output. और क्यों हम ऐसा चाह रहे थे? Because I wanted if this is my controller and this is my port B, and supposing you have connected onto the port B some LEDs, port 0, port 5 and port 7. अगर मेरे इतने ही टास्क होते तो मुझे क्या करना होता? मुझे पोर्ट PB0, PB5 एंड PB7 को मुझे आउटपुट पोर्ट बनाना पड़ता। तो अगर ये काम करना है तो ट्रिस रजिस्टर के अंदर क्या लिखते आप? तो अगर खाली मेरा काम अगर ये था, मुझे अगर इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, तो दोबारा से इसको समझने की कोशिश करिए। तो ट्रिस डी के अंदर मैं क्या लिखता? 0 पर मुझे आउटपुट बनानी है, 1 2 3 4 कुछ भी होते हैं, आई एम नॉट केयर्ड अबाउट इट, 1 2 3 4, but 5 is output, so 5 is output. I'm not bothered about 6, and 7 is output. So you would have written in the tris B here, तो यहां पर आप लिखते move a literal into the accumulator। आप डायरेक्टली ट्रिस में भी लिख सकते थे, एक लाइन में काम चल सकता था। Move a literal into the accumulator, and literal is, इसकी वैल्यू बनाते हैं। सपोज हम ये लिखना चाहते हैं, तो ये लिखना चाहते थे, ये वैल्यू क्या होती? दिस इज 5 एंड दिस इज E। तो हम क्या लिखते? 5E। और इस 5E को जो कि accumulator में है उसको ट्रिस B में कर देते, तो ट्रिस B की वैल्यू ये हो जाती, यानी कि पोर्ट PB0, PB5 और PB7 मेरे आउटपुट पोर्ट्स बन जाती। Any query at this time? RG, are you listening? Come on the chat and respond whether you are able to understand or not.
Is it clear? Archie, respond on the chat. Anyone, any doubt? You can just stop me and get the clarification. So now you will see, after having gone through this example, you will appreciate that programming with PIC is not a tough task. लेकिन क्या आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी काम करने के लिए कौन से रजिस्टर इन्वॉल्व हैं, उन रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली करना पड़ेगा. This is what exactly you require. Now you may ask me कि अगर ये ऊपर ये वाले लाइन्स अगर आप नहीं लिखते, सपोज नहीं लिखते, तो क्या होता? फिर यहां रजिस्टर फाइल का मतलब क्या है? फिर तो ट्रिस भी नहीं है ना, फिर तो ये ट्रिस भी की जगह एड्रेस 86 आ जाएगा, हेक्साडेसिमल एड्रेस 86. You need to write a hexadecimal. याद रहे कि जब आप PIC की प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर डेसिमल लिखना है नंबर, तो if you write .86, so this is decimal 86. If you write H-86, it is hexadecimal 86. If you write B-10101010, it is a binary number. So you will deal with the numbers this particular way. Let me take you to another example. Another example, again related to the ports, will be concerned with only the port programming. And I hope once the port programming is clear to you, you can cope up with the programming. You can download this stuff from the internet, and also I am trying to upload some material on your care4u.in also. You can see that I have already loaded some material on the care4u. You can directly go at care4u.in and look at the home page. Go into the electronics, you will find some PIC notes available there. So let us see some more examples of let me take some more examples. I will again emphasize, you have to see for which microcontroller you are writing a program, for which family of the PIC you are writing a program. You have to be very specific, very clear. क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं और उससे आपको समझ में आ जाएगी कि सपोज आप PIC PIC 16F84 जो आपकी लैब में किट है PIC प्रोग्रामिंग का, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है ये हुआ है, and इस कंट्रोलर पर you have only 2 banks of the registers. तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप स्टेटस रजिस्टर को एक्सेस करेंगे तो स्टेटस रजिस्टर में किस लिए एक्सेस करेंगे? बैंक सिलेक्शन के लिए. तो बैंक सिलेक्शन बैंक कितने हैं? इसमें 2. तो 2 बैंक को सिलेक्शन करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? अगेन आर्ची चैट में बताइए मुझे. PIC 16F84 के स्टेटस रजिस्टर में जो बैंक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर ओनली 2 बैंक हैं, तो 2 बैंक सिलेक्शन करने के लिए स्टेटस रजिस्टर में कितने बिट्स हैं बैंक सिलेक्शन के लिए? आर्ची कम ऑन द चैट एंड आंसर मी. क्वेश्चन क्लियर है? 16F84 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 2 रजिस्टर बैंक्स हैं. तो 2 रजिस्टर बैंक को सिलेक्शन करने के लिए
स्टेटस रजिस्टर में कितनी बिट्स होंगी? फास्ट। ओनली वन, बिकॉज 2 पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें एक बिट होगी, दैट इज RP0 ओनली। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूं 16F877 के लिए, तो ये सपोर्ट करता है 4 बैंक्स को। तो अगर मैं इसके लिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो स्टेटस रजिस्टर में 2 बिट होंगी 4 बैंक को सिलेक्शन करने के लिए, RP0 एंड RP1। तो मुझे 2 बिट्स को प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक को सेट करना पड़ेगा, एक को रीसेट, या दोनों को सेट करना पड़ेगा, दोनों को रीसेट करना पड़ेगा। चलिए, लेट्स कम ऑन द प्रोग्रामिंग। माय क्वेश्चन इज, I want to initialize there can be number of ways. Let me write a program for the 877 this time. So I will start with the port B. रजिस्टर में एड्रेसेस वही हैं रजिस्टर्स के, चाहे वो ये रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर है, चाहे ये वाला माइक्रो कंट्रोलर है, चाहे ये कंट्रोलर है। क्योंकि जो बेस माइक्रो कंट्रोलर था उसके जो रजिस्टर्स हैं वो उसी पोजीशन पे रखे गए हैं जो पहले थे। नए माइक्रो कंट्रोलर में उसी पोजीशन पे हैं। Somebody is... Okay, I am audible. So only difference is कि आपने देखना ये है कि कौन से कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। I hope I'll be able to complete this and then we'll move to little harder example. Let me go faster. Where is port B? पोर्ट बी का एड्रेस क्या है? पोर्ट बी का एड्रेस क्या है? 06। इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रजिस्टर क्या है? ट्रेस। हर पोर्ट का ट्रेस रजिस्टर है, ट्रेस बी। पोर्ट 1 में बैंक 1 में है तो बैंक 1 में इक्वल उसी पोजीशन पर 8 की जगह 6 की जगह 86 हो जाएगा। स्टेटस इक्वल्स पोर्ट 1 में बैंक 0 के अंदर है एट एड्रेस 3। आई कैन राइट RP0 RP1, क्योंकि अगर 877 के लिए कर रहे हैं आप, 877 के लिए कर रहे हैं तो 4 बैंक हैं तो उसके लिए 2 पिन RP0 RP1। सो इक्वल 5 इक्वल 6। Please confirm this bit number. I'm not very sure whether they are 4 or 5 or 5 or 6. Please confirm. So let's say after doing this, now we will start writing the program. ORG, let's say 0, go to start. There can be other instructions. Start will be here. Now I can configure these different registers. So for selecting the bank 1, I have to select these 2 bits into the status register. By default, I am into the bank 0 register. So I can, अगर मुझे ट्रिस बी में जाना है तो 00 बैंक 0, 01 बैंक 1। ट्रिस कहाँ पर है? बैंक 1 के अंदर। तो RP0 को क्या करना पड़ेगा? सेट। और RP1 को क्या करना पड़ेगा? रीसेट। तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा? DSF बिट सेट फाइल। किसकी फाइल? स्टेटस रजिस्टर की। और इसकी कौन सी बिट? अब 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? RP0 एंड बिट क्लियर F of the status register and RP1. So this will select bank 1. So बैंक 1 में क्या है? ट्रिस रजिस्टर। अब मैं ट्रिस को क्या बनाना चाहता हूं? लेट्स से
पोर्ट बी को मैं एज ए आउटपुट पोर्ट बनाना चाहता हूं, एंड सभी ऑल पिंस को आउटपुट बनाना चाहता हूं। तो आई कैन राइट मूव ए लिटरल इनटू द अकोमोडेटर एंड द लिटरल इज 00। ट्रिस बी के अंदर मैं जब 00 लिखूंगा तो माई पोर्ट बी विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट। So I can now transfer this value into the tris B.